Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to online classes. First of all, if my voice is loud and clear, please tell me by raising your hand. All right, that's good. Okay, students, today we will start from chapter number 6 of your novel Arabian Nights. It's on page number 35 of your novel. Okay? The Tale of Sinbad the Sailor. स्टूडेंट्स प्लीज बी ऑन टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी क्लास में एंटर नहीं हुए हैं। नेक्स्ट टाइम से प्लीज बी ऑन टाइम, अदरवाइज फिर हमारा लेक्चर और डिले हो जाएगा अगर आप स्टूडेंट्स टाइम पर क्लास को ज्वाइन नहीं करेंगे तो। ओके, द टेल ऑफ सिनबाद द सेलर। सिनबाद इज द पर्सन, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, टेल मीन्स स्टोरी एंड ही इज अ सेलर, and the main characters of the story are Sinbad, the captain of the ship, and sailors, a friend of Sinbad, and there are a lot of animals in this story. So, Sinbad is a very adventurous character of the story. He loves to go far away across the sea to find treasure, to earn money, to explore things. Okay, so he's a very adventurous person. अब स्टोरी के बिगिनिंग में भी आप देखेंगे कि he is up to a journey. When I was still young, the first hiding they came, we sailed away. When I was still quite young, my father died and left me all his money. I bought a ship, I paid a captain and some sailors to work for me. I was sure I was gonna make a lot of money. यहाँ पे student, one thing to notice is that कि यहाँ पे the use of subject I, इसका मतलब ये है Sinbad himself is telling you a story. ठीक है? This story is told by himself Sinbad. ठीक है, so that's why यहाँ पर आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आई हुई इस तरह से होंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपनी स्टोरी खुद ही आपको बता रहा है। When I was still quite young, my father died. स्टोरी के शुरू में क्या होता है कि he has lot of money and he has bought a ship. उसने एक शिप खरीदी है, he paid a captain to work for him and some sailors. ठीक है, and he's sure that he's going to make a lot of money from this journey. We sailed far away across the sea at last. आखिरकार we saw a small island. उसने क्या देखा? एक small island देखा. It wasn't very big, just a yellow beach, a few small plants. ठीक है, तो वो island कैसा था? The island was looking big. It was yellow. It was looking just like a yellow beach and few with small few plants on it. Some of us decided to go on land. The captain was asleep. Captain was asleep means कि captain अभी सो रहा था और some of them यानी कि Sinbad with his few sailors, ठीक है, उन्होंने क्या decide किया कि वो जाएंगे इस island पे. We do not wake him. उन्होंने captain को नहीं जगाया. Two of our sailors took a big wooden barrel full of dirty clothes. This is the barrel, students. This story is this is the picture of the barrel. वुडन बैरल था जो कि उन्होंने अपने साथ लिया और उसमें उन्होंने डर्टी क्लोथ्स को डाला। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो इस आइलैंड में जाके, उनको ये लगता था कि आइलैंड में उनको फ्रेश वाटर मिलेगा और जिस फ्रेश वाटर से वो इन कपड़ों को धो लेंगे। ठीक है, इसको जस्ट रीड आउट कर लेते हैं जल्दी से बिकॉज दिस चैप्टर इज अ बिट लेंथी स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर इन बिट्स एंड पीसेस। ओके, इस चैप्टर को स्टूडेंट्स आपने खुद रीड करना है थोरली, कंप्लीटली आपने इसको रीड करना है। इंशाल्लाह अगर हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे इन माय क्लास आई विल टेल यू टू रीड दिस चैप्टर। ठीक है,
तो आपने क्या करना है कि इस चैप्टर को आज फुली कंप्लीटली रीड करना है घर जाके. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मेन हैपनिंग्स, मेन थिंग्स. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो वहां पे चले जाते हैं आइलैंड पे उन कपड़ों को धोने के लिए. ठीक है. और सडनली व्हाट हैपेंड, सडनली के सडनली वी सॉ सम वाटर शूटिंग अप इनटू द एयर. इट फ्लू अप हायर देन द टॉलेस्ट ट्री, देन इट ड्रॉप्ड डाउन अगेन. ठीक है. उन्होंने क्या देखा कि उस आइलैंड में से एक उस आइलैंड में से पानी निकल रहा है. इट्स जस्ट लाइक अ शूटिंग अप इनटू द एयर. उस तरह से निकल रहा है जैसे शूट पानी आसमान की तरफ शूट किया हुआ हो, और वो वैसे ही इसी तरह से वो नीचे आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है, I closed my eyes and rubbed them. When I opened them again, I could not believe what I saw. The island comes to life. The next heading is the island comes to life. Suddenly we heard the voice of captain. क्योंकि वो एक आइलैंड पर थे. ठीक है. और उनकी शिप जो है वो उनसे दूर थी. ठीक है. तो क्या हुआ कि उन्होंने वहां पर कैप्टन की आवाज सुनी. एंड व्हाट ही वाज सेइंग दैट ही वाज awoke now and he could see what was happening. Come back to the ship, he shouted. You are in horrible danger. ये कौन कह रहा है, ये कैप्टन ऑफ द शिप कह रहा है. दूर से जब उसने देखा तो उसे पता चल गया कि वो कहाँ पर खड़े हैं, तो इसलिए उन्होंने उसने उसे चिल्लाकर बुलाया कि कम बैक टू द शिप. द आइलैंड इज मूविंग, द सेलर शाउटेड. ठीक है. दो सेलर्स और साथ में सिंबाद उस आइलैंड पर गए थे. और एक सेलर ने क्या कहा, द आइलैंड इज मूविंग. वी रैन टू अ लिटिल बोट. वो अपनी लिटिल बोट की तरफ भागे. द शिप वाज सेलिंग अवे फ्रॉम अस. ठीक है. क्योंकि कैप्टन को पता चल गया था कि ये एक आइलैंड नहीं है, तो उसने क्या किया, उस शिप को वहां से दूर लेकर जा रहा था. और मीनवाइल सिंबाद और इसके जो दो सेलर्स हैं वो लिटिल बोट की तरफ भर रहे थे, जिसमें वो बैठ के वहां से इस आइलैंड से दूर जाकर अपनी शिप में पहुंच सकें. ठीक है. And the island was going down. Already the yellow beach was smaller. We are on a huge fish, one of the sailor cried. Or fire has woken it. ठीक है. जब वो वहां पर गए थे फिश, जब वो उस आइलैंड पर गए थे तो उन्होंने वहां पर आग जलाई थी, जिसकी वजह से वो जो शिप थी वो जाग गई. और उनको ये चीज पता चली कि ये आइलैंड जो है वो एक ह्यूज फिश है. He was right. That was no island. It was the sleeping body of a huge fish, the largest fish in the world. For years and years it slept. Now it was awake. And it was also in pain. ठीक है. सो वो चीज क्या थी, वो एक स्लीपिंग बॉडी थी ऑफ अ ह्यूज फिश, जो कि लार्जेस्ट फिश थी इन द होल वर्ल्ड, जिसको उन्होंने जगा दिया था. His huge tail flew up into the air and fell down on our little boat, and the boat broke into 1,000 pieces. I was frightened. I thought I was going to die. ठीक है. What happened next is, क्या होता है कि जब वो फिश जाग जाती है तो उसकी टेल की वजह से, जब वो अपनी टेल उठाती है तो वो किस पर गिर जाती है, उनकी बोट पर गिर जाती है. और वो बोट जो है टुकड़ों में बदल जाती है, टूट जाती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है. और तब सबको लगने लग जाता है कि वो मर जाएंगे. डू यू नो व्हाट सेव्ड माय लाइफ. ठीक है. यहाँ पे किसकी लाइफ की बात हो रही है, यहाँ पे सिंबाद की लाइफ की बात हो रही है. इट वाज दैट स्टूपिड बैरल ऑफ डर्टी क्लोथ्स. आई सॉ इट बिसाइड मी इन द वाटर. ठीक है. बिसाइड मींस नेक्स्ट टू. फिर उसकी जान किसने बचाई, वो जो दो सेलर्स थे वो मर गए. और उसके बाद क्या हुआ, सिंबाद है वो किस तरह से बच गया, क्योंकि उसने अपने नेक्स्ट अपने पीछे क्या देखा, बैरल देखा, जिसमें वो चढ़ गया और उसने अपनी लाइफ को बचा लिया. ठीक है. द सेलर वेंट डाउन विद द ह्यूज फिश टू द बॉटम ऑफ द सी. ठीक है. लेकिन कौन बचा, सिर्फ और सिर्फ सिंबाद बच गया. क्यों, क्योंकि वो वुडन बैरल में, उसने वुडन बैरल को पकड़ लिया और वो उसकी वजह से डूबा नहीं और वो बच गया. नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेंज चर्च. अच्छा, द शिप वाज फार अवे. अब जो शिप थी वो फार अवे, बहुत दूर जा चुकी थी. आई वाज अलोन इन द वाइड एम्प्टी सी. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई वाज इन माय बैरल, बट एट लास्ट आई वोक अप ऑन अ वाइड वाइट बीच. ठीक है. अब क्या होता है कि वो उसी बैरल में सो जाता है और जब वो उठता है तो वो एक बीच पे होता है.
Where am I? I thought, if I climb up a tree, perhaps I can see something. I climbed a tree, looked around far away. I saw a huge shining white dome. There must be a church over there, I cried. ठीक है, उसे क्या दिखता है? डूम दिखता है. डूम कहते हैं इस तरह की शेप को. ठीक है, राउंड शेप. तो उसने क्या सोचा कि वो जो राउंड शेप चीज है वो कोई चर्च है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोग रहते हैं. ठीक है. There must be church over there, I cried. I walked very fast on my poor tired legs towards the dome. When I arrived, I found no doors, no windows. ठीक है, उसने क्या देखा कि जिसको वो चर्च समझ रहा था, ठीक है, वो उसमें ना तो कोई डोर था और ना ही कोई विंडो. The whole dome was a white and smooth as an egg. I did not understand it. ठीक है, फिर उसको क्या पता चला कि वो डोम नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि व्हाइट स्मूथ एग होता है. ठीक है. Suddenly the sky grew dark. Was it a rain cloud? I looked up and saw a huge bird larger than the biggest cloud you have ever seen. ठीक है. And now he has come up to many different things in his journey. यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर हम देखेंगे कि जो सिंबाद है उसकी जर्नी में क्या क्या कुछ होता है, क्या क्या किन किन लोगों से मिलता है, किन किन चीजों से मिलता है, वो किस किस की सिचुएशन, किस किस तरह की सिचुएशन से गुजरता है. अब वो कहाँ पर मौजूद है? वो अब एक बीच पे मौजूद है जहां पर उसको क्या दिखा है? एक बर्ड दिखा है जो कि इतना ज्यादा, जो कि बहुत ज्यादा बिग है. लार्जर देन द बिगेस्ट क्लाउड यू हैव एवर सीन. ठीक है. जो बिगेस्ट क्लाउड होता है जो हमने आज तक देखा है उससे भी ज्यादा वो बर्ड बिग था. इट वॉज अ ग्रेट जाइंट ऑफ अ bird, the largest bird in all the world. Then I knew something else. The church was egg, a bird's egg. ठीक है. और उसके बाद उसने क्या अंडरस्टैंड किया? उसने ये अंडरस्टैंड किया कि वो जो डूम है, जो कि दूर से डूम लग रहा था, इट वॉज एन illusion. और वो क्या निकला? वो एक बर्ड्स एग निकला. और उसने अपने ऊपर क्या देखा? एक बहुत ह्यूज बर्ड को. बिफोर आई कुड रन अवे, ठीक है, इससे पहले कि वो वहां से भागता, द बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट्स leg. It was a I was a prisoner under its great body, hot body. My turban fell off my head. Turban किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको पगड़ी को कहते हैं. ठीक है. टर्बन किसको कहते हैं? पगड़ी को. अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि बिफोर आई कुड रन away, the bird flew down and sat on its egg. I was prisoner under its great hot body. My turban fell off my head. ठीक है. अब नाउ वो वहां पर स्टक हो चुका है, फंस चुका है, और वहां पे बर्ड भी वापस आ गई है. That made me think of a plan. I tied myself to the bird's foot with the cloth of my turban. I prayed to God to help me and then I went to sleep. उसने क्या किया? He think of a plan. उसने अपनी टर्बन के साथ टर्बन को उतारा, उसको खोला और अपने आप को जो बर्ड था उसकी फीट के साथ बांध दिया. ठीक है. और फिर वो वहां पर सो गया. Snakes and the diamonds. When I woke, the wind was blowing past my ears. I was हैंगिंग अंडर द बर्ड्स फुट. ठीक है. अब यहाँ से आगे क्या होता है कि वो बर्ड अपनी जगह छोड़ देता है. नाउ ही इज फ्लाइंग. देयर वाज नथिंग एक्सेप्ट एम्प्टी एयर बिटवीन मी एंड द ग्राउंड. एवरी बीट ऑफ बर्ड्स great wing was carrying me higher. I looked down and saw the egg. It looked as small as a toy. अब वो इतना ऊपर आसमान में उड़ रहा था कि उसको वो जो huge egg था वो भी just like a small toy लग रहा था. I shut my eyes again and began to pray. Up and up we went. The air grew thin and cold. When I opened my eyes, the bird was flying slowly, very close to the ground. ठीक है. जब वो उठा तो उसने क्या देखा कि जो बर्ड है वो अब नीचे ग्राउंड के बहुत करीब आ चुका है. I untied my turban from its foot and jumped down. ठीक है. वो इतना ह्यूज बर्ड था कि उसे नहीं पता चला कि कोई पर्सन जो है उसके पाँव के साथ उसने खुद को टाई अप किया हुआ है. ठीक है. जब वो ग्राउंड के पास पहुंचा हो रहा था तो उसने अपनी टर्बन को खोला और वो नीचे उतर गया. I fell into a strange, lonely place. There was black rocks everywhere, no trees, no grass, no water. I cried to God, "Oh Father, why did you save me from the sea? Was that death too gentle for me?"
अब यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर वो एक स्ट्रेंज लोनली प्लेस में, जहाँ पे दूर दूर तक, far away he couldn't see anyone. और वहां पे वो क्या देखता है कि देयर वर ब्लैक रॉक्स एवरीवेयर, और जहाँ पर हर जगह पे ब्लैक रॉक्स पड़े हुए होते हैं, यहाँ पे कोई ट्री, कोई ग्रास, कोई भी वाटर के साइन नहीं होता। ठीक है। आई क्राइड टू गॉड, ओ फादर व्हाई डिड यू सेव मी फ्रॉम दैट सी, फ्रॉम द सी। अब वो वहां पर दुआ ये करता है, वो ये पूछता है अल्लाह ताला से कि मुझे सी से क्यों बचाया, वाज दैट दैट टू जेंटल फॉर मी, क्या अगर मैं वहां पे मर जाता तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जेंटल होता, easy होता। I looked around. There were great walls of rock all around me. They were very high and there was nowhere to climb up. अब उसने क्या देखा कि उसके आसपास वॉल ऑफ रॉक्स है, और वो इतनी ज्यादा हाई है कि वो उसको ऊपर नहीं, उनके ऊपर नहीं चढ़ सकता। I was sure I could never get out. उसको ये श्योर था, he was sure about this, that कि वो इस जगह को कभी भी लीव नहीं कर पाएगा। Suddenly something moved beside a rock. Beside means next to. It was a snake. I saw many more snakes asleep on the hot rocks. उसने क्या देखा कि everywhere on that place, हर जगह पे क्या था, snakes थे। One of them woke and began to move towards me. और उनमें से कोई एक जागा और उसकी तरफ उसने आना शुरू कर दिया। I picked up a stone to throw at it. Then I looked at the stone and my mouth fell open with surprise. So he got surprised with what he had in his hands. वो क्या था? It was a huge, beautiful diamond, bigger than the biggest diamond you have ever seen. ठीक है, अब now उसको क्या मिला है? He has found a diamond there. Everywhere I looked, the ground was covered with diamonds and other jewels. What a place! I said to myself, snakes and the diamonds. Just then, उसी वक़्त, a large bird flew down and caught one of the snakes. The others moved away. They were frightened of birds. Who were frightened of the birds? The snakes were frightened of the birds. Saved by a piece of meat. Just then something heavy fell down on the ground beside me. उसी वक़्त उसने क्या फ़ील किया कि समथिंग हेवी जो है वो उसके पास ही ग्राउंड में गिरा है। एट फर्स्ट आई थॉट इट वाज़ वन ऑफ द बिग बर्ड्स, देन आई रियलाइज्ड इट वाज़ अ पीस ऑफ मीट। उसने क्या देखा? उसने ये रियलाइज़ किया, उसको ने ये फिगर आउट किया कि इट वाज़ जस्ट अ पीस ऑफ मीट। Later I understood what was happening. The people who live in that place want the diamonds, but they are afraid of snake. अच्छा, नियरली वहां पर कुछ लोग रहते हैं, लेकिन वो जो लोग हैं वो स्नेक से बहुत ज्यादा डरते हैं। दे आर अफ्रेड ऑफ द स्नेक, सो दैट्स व्हाई दे कुडंट गेट द डायमंड्स। तो इसी वजह से वो इस डायमंड्स को हासिल करने के लिए क्या करते हैं, क्या अब उनका प्लान करते हैं डायमंड्स को हासिल करने के लिए? दे थ्रू लार्ज pieces of meat down. Some of the diamonds stick to the meat. When the large bird come, they carry the meat and the diamonds out of that horrible place. I saw a way to escape. I filled my pocket with diamonds. Then I took the piece of meat in both hands and held it up. One of the birds flew down to get the meat. I lifted the piece of meat and me. It lifted the piece of meat and me off the ground and flew towards its nest. Its baby was waiting. That baby was as big as a sheep. The bird began to tear up the meat to give its baby. I thought it would tear me up and give me to the baby too. Okay, now अब यहाँ पर क्या होता है कि जब वो देखता है कि कोई जो यहाँ पे पास ही लोग रहते हैं, क्योंकि वो स्नेक से डरते हैं, वो डायमंड्स को हासिल करने के लिए पीस ऑफ मीट को यहाँ पर फेंकते हैं। ठीक है। अब वो जो पीस ऑफ मीट है उसके साथ डायमंड स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, और कोई ना कोई बर्ड आके उसको ले जाता है। जब वो बर्ड अपने नेस्ट के पास जाता है, अपने जब वो बर्ड अपने नेस्ट में जाता है अपने बेबीज को मीट
खिलाने के लिए। तो वो जो लोग हैं वो चुपके से जाके वहां से डायमंड्स को निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से उसने भी एक एस्केप प्लान बनाया। उसने अपनी पॉकेट को डायमंड से भरा और अब मीट को अपने हाथ में रख के उसे ऊपर किया और एक बर्ड ने आके मीट समेत उसको उठा लिया, ठीक है, और वो अपने बेबीज के पास उसको ले गया। Next, they came a new friend. Suddenly, I heard shouts. Stones fell into the nest. The bird dropped the meat and flew away. A face looked at me over the edge of the nest. Now you know how the people get the diamonds. Brave, two greedy men climb up to the bird's nest. They frighten the birds away and take the jewels. Some people will do anything for money. अब यहाँ पर क्या होता है? He met a friend. उसने क्या देखा कि वहां पर जैसे ही वो नेस्ट में पहुंचा तो वहां पर पत्थर गिरने लगे, जिसकी वजह से बर्ड ने उस मीट को छोड़ दिया, पीस ऑफ मीट को, और वो वहां से उड़ के चला गया। और इसी तरह से उसको एक पर्सन मिलता है। और वो पर्सन कौन है? वो पर्सन है जो कि डायमंड्स को हासिल करना चाहते हैं। देयर आर नो डायमंड्स इन द नेस्ट माय फ्रेंड, I said to the man. He was too surprised to answer. Forgive me. I went on. I went on means I carried on. मैं बोलता गया. I do not want to frighten you. Just help me to get out of here. I have many beautiful diamonds in my pocket. I shall be glad to give you half of them. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उसे यहाँ पर एक पर्सन मिला है जिसको उसने ये कहा है। उसने उसको ऑफर क्या किया है? उसने उसे ऑफर किया है कि अगर तुम मुझे यहाँ से इस नेस्ट से बाहर निकालने में मदद करोगे तो मेरे पास हाफ डायमंड जो है, मेरे पास जितने भी डायमंड्स हैं उनमें से मैं हाफ तुमको दे दूंगा, ठीक है। That man was a true friend of me. He helped me down from the bird's nest, gave me clean clothes and good food. He helped me to sell my jewels. I had enough money to buy 6 beautiful ships. अब वो जो jewels थे, जो diamonds थे, वो इतने expensive थे कि उससे उसने 6 ships को खरीदा और उस फ्रेंड ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की। नेक्स्ट देखे, I wanted to sail to Baghdad क्योंकि वो बगदाद से ताल्लुक रखता था। He was from the Baghdad, तो वो वहां पे वापस जाना चाहता था। I wanted to sail to Baghdad, but we were a long way from home. लेकिन वो घर से बहुत दूर थे। No one knew of such a place. किसी को भी ऐसी जगह का नहीं पता था। I found a captain for my ships and filled them with treasure. ठीक है, अब उसने वहां पर क्या किया? He spent some time there. उसने वहां पे कैप्टन्स को ढूंढा अपने शिप्स के लिए और उस शिप्स को डायमंड से, ट्रेजर से भर दिया। I sell them the to all the 4 corners of the world to look for Baghdad. ठीक है, अब उसने तमाम शिप्स को चारों सिम्त भेज दिया, 4 डायरेक्शंस में उसने भेज दिया ताकि कोई ना कोई एक शिप तो बगदाद की तरफ पहुंच जाए। I was sure that one day they must hear news of my home. और उनको इसको ये श्योर था कि किसी ना किसी एक दिन उसमें से किसी ना किसी कैप्टन को बगदाद जरूर मिल जाएगा। I myself got into the biggest treasure ship of all. अब वो भी एक शिप में, ट्रेजर शिप में चला गया। We sailed with the wind. God makes the wind blow, I said. I hope he will send me home. So he was hoping that he will soon find his home. Monkey sailors. One morning we saw an island, fresh water at last. I said. The captain shook his head. I don't think I like this place, he said. ठीक है, one morning उन्होंने एक आइलैंड देखा, fresh water at last. Again the fresh water he found. Excuse me. Okay, उनको दोबारा से fresh water मिलता है। I don't think I like this place, he said. उसने क्या कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये जगह अच्छी लग रही है। Suddenly a small ship came towards us at top speed. बहुत ज्यादा स्पीड से एक शिप इनकी तरफ बढ़ती है। Its sailors were as small as monkey. उसके सेलर जितने स्मॉल होते हैं जितने मंकी स्मॉल होते हैं। There were hundreds of them and they came onto our ship and fought with us. अब वो जो सेलर्स थे, they were the fighters. अब जब वो शिप की तरफ पहुंचते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर, तो वो शिप की तरफ बढ़ रहे हैं और जब वो शिप की तरफ बढ़ते हैं वो वहां पर फाइट करते हैं क्योंकि वो शिप को
हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। और वहां पर उनकी शिप में हंड्रेड्स ऑफ मंकी होते हैं जो कि ऑल ऑफ देम वर द वॉरियर्स। Soon we were all prisoner in our own ship, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं तो वो लोग नहीं जीत पाते। The little monkey man sailed our ship to the island. अब वो जो मंकी मैन होते हैं वो उनकी शिप को आइलैंड की तरफ ले जाते हैं। Its name was Gup, an ugly name for an ugly place. They picked us up. Five of them could carry one of और सेलर्स इजीली, ठीक है। वो इतना स्मॉल होती है लेकिन फिर भी फाइव ऑफ देम जो है वो एक सेलर को उठा सकता होता है। एंड टुक अस टू द बीच, और वो बीच की तरफ ले जाते हैं क्योंकि वो उससे हार जाते हैं। सो अब वो वहां पर उसके प्रिजनर बन चुके होते हैं। दे लेफ्ट अस, वहां पर वो उससे मंकी सेलर्स जो है छोड़ देते हैं। देन दे गोट इनटू माय लवली शिप एंड सेल्ड अवे, और वो मेरी लवली शिप पे चढ़ जाते हैं और वहां से वो दूर चले जाते हैं। What happened next is, well, I said to the captain, we have lost our ship and our treasure, but we still have our lives. The captain did not answer, he was praying, ठीक है। मे बी के जो कैप्टन है उसको आइडिया हो चुका होगा कि अभी उनके साथ क्या होने वाला। I looked around, behind the beach was a large house with a very high wall all around it. The great iron gate was open, so we went inside. We looked for somewhere to sleep. We saw no one, but there were white bones all around. So it was a very scary scene to look at। जब वो वहां पे आइलैंड पे पहुंचते हैं वहां पे उनको गेट दिखता है। Are they for the dogs? I said. The captain went very white and said nothing. So it is it looks like कि जो कैप्टन है यहाँ पे वो जानता है कि उसे क्या क्या होने वाला है, and he is very much frightened of that place. So student, I'll end here. Tomorrow, inshallah ta'ala, I will finish this story, and then we will move towards the words, meaning, and sentences. Okay. Allah Hafiz. See you in the next.